done. Okay. So let's continue. Route 53. आज कौन सा बार है? डे क्या है? वेनसडे है. Wednesday. Okay. Then route 53 letter. We start lambda. Most important topic. Because route 53 is a vast subject, but our requirement only limited options. Okay. Because DNS related, the people who are going to continue DNS around 10-15 years experience. Okay. And your job is not related to DNS. DNS means web server related or DNS core. Core company is going to manage it. So we are going to start Lambda. IAM का रोल, यूज़र, ग्रुप, पॉलिसी. पॉलिसी को हम बाद में दिखाएंगे क्योंकि आपको जेसन कोड आता नहीं. तो जेसन बिना जेसन पॉलिसी कैसे लिखेंगे, हाउ टू क्रिएट इट, वो मैं दिखाऊंगा. आएगा उसका ऑप्शन. CLI MFA रोल्स, यूज़र, ये सब कुछ. पॉलिसी बिना जेसन कोड आप पॉलिसी भी मेंटेन कर सकते हैं, वो दिखा देंगे. So let's start Lambda. First try to understand what is this Lambda and why this Lambda. What actually happened in this Lambda? Suppose you are using number of EC2. How many EC2? 20 EC2. What is the purpose? Development purpose. This developer is going to utilize this PC 9 AM to 9 PM. Not 12 hours, but we are going to utilize 9 AM to 8 PM. Because as per their 9 hours plus 1 hours, 10 hours you can set it. Because backup and others, copy. So this developer machines, this EC2, if it is running 24 hours, then we have to pay for 24 hours. But if it is running 12 hours, then we have to pay half amount per day. So cost minimization. Now, who is going to take the responsibility to start this 20 EC2 or 200 EC2, whatever may be, at 9 AM and stop it at 9 PM? This is manually is quite impossible. Okay. At the same time, 20 machine is going to start and 20 machine is going to stop. So this operations, this EC2 is going to start or stop by Lambda. Lambda function means you have to write some code. You can write in Java, Python, Node.js, .NET, so many options are there. So Lambda function through, you have to write your code and you have to run this code. Again, one more question, why I am going to run manually this code? So this Lambda function code is going to trigger by CloudWatch. Inside of CloudWatch, I mention at that time, at a particular time, CloudWatch is going to trigger the Lambda. Lambda is going to stop the EC2. Lambda execute the function. That function is going to stop the EC2. Okay. Now, how it is possible? See, EC2 and Lambda both are same type of function. That is, permission is same. Suppose in a classroom, 40 students are there. Their capacity same. All are students. They cannot overrule to other students. But one student is there. He can overrule. That is monitor. We grant some extra permissions. So we have to attach some permissions to Lambda. Okay, we have to attach this function, Lambda function plus some IAM role.
inside of that IAM role, I grant some permission that Lambda can access EC2. Okay? So that Lambda is going to overrule, stop the EC2, start the EC2. So, what is our target? We have to write one Lambda function and we have to attach some IAM role so that Lambda function has the permission to stop and start the EC2, and CloudWatch is going to trigger only trigger the Lambda at a particular time. Fine. So let's see. लैम्डा तो सर्विस है, लैम्डा के अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा, वो तो अमेजन नहीं दे रहा है, कोड आपका मतलब आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको नहीं आता है, डेवलपर लिखेगा, आप नेट से ढूंढो मिल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर दो, काम करेगा. ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, कोई कोड लिखना नहीं पड़ता है, सब कोड है नेट में, सिर्फ उसको ढूंढो, कॉपी पेस्ट करो. तो लैम्डा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज लैम्डा, देन व्हाट इज द आंसर? लैम्डा क्या है? लैम्डा इज अ AWS service, but it is known as serverless service. Serverless service means server means EC2. Any EC2 means it's a server. Okay, it's a computer. So Lambda, suppose if I want to run a code, Python code, what is my requirement? I write one Python code in my paper, on paper. Now I want to run it. So what is the requirement? One computer and Python libraries, Python softwares, right? Then only code is going to run. But here within this Lambda, we are not going to use any EC2. We are not going to use any Python. These are, we have to choose it. Lambda automatically utilize when code is going to execute, that execution time it is going to use one EC2 instance, okay, and as per your choice library file and execute it. So what are the benefits? If I am going to use one EC2 instance, I have to pay for that 10 minutes, 15 minutes, but execution time few milliseconds. So you have to pay only for few milliseconds. When Lambda is going to execute it, we have to pay for only that execution time purpose. Okay, some milliseconds, 100, 200 milliseconds, right? So Lambda purpose, one diagram is there. Just a minute. And its main function is to serve run use the EC2. No, not EC2. Start 20 or whatever number of. This is one example. So many different jobs are there. Okay. So Lambda is a serverless service from AWS. Basically, we use to automate something. See, try to understand Lambda diagram. This is my Lambda. I have to write the Lambda function. This Lambda function, I attach one IAM role. With the help of this IAM role, Lambda function is going to hit this EC2. That is EC2 stop, start. And Lambda function is going to execute by the CloudWatch. If I write my program, I have to run it, then only it is going to execute. So manually, I am not going to run it. CloudWatch automatically execute this Lambda. इस Lambda के अंदर, ठीक है, दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में. Sir, CloudWatch is a scheduler sort of thing?
or it's just like. CloudWatch scheduler also, as a monitoring tool also. Okay. अच्छा, बोलो आप तक कोई डाउट्स है? वही तो सर, हाँ बोलो. क्लाउड वॉच में कुछ फीचर वगैरह हाँ. अभी तो वो तो चलो प्रैक्टिकली देखते हैं. ये लिटिल बिट लेंदी, क्योंकि वन बाई वन EC2, लैम्डा, IAM, क्लाउड वॉच थोड़ा लेंदी है, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना. What I am going to do? First IAM role, lambda, CloudWatch, then test it. Fine. First one EC2 instance. Let's create one instance. Suppose PC1. Like this, number of PCs are there. Okay. T2 micro, key pair, networking, default, A, enable, security group, 8 GB, launch. This is my PC. Under tag, I am going to use, already one tag is there, name PC1. You can add 50 tag, total one is over 49. Add new tag, type dev, that is these are development machine. Okay, this is important because my lambda function is going to check. Suppose 100 EC2 is running. Within this 100 EC2, it is going to stop that particular EC2 or start that particular EC2 where tag is dev, not for production. Different tag is there, prod, UAT. So only dev machine is going to stop or start, right? So that this tag is important. Save it. Let it be create. Right click, duplicate. I am going to create IAM role. So IAM this is the function, lambda function. This is available in net using Python. You can utilize any code if you know anything, Java, .NET and others. In this code I mention tag type values dev and instance dot stop, that means it is going to stop the instance, and return success. Any function means always it is going to return something. So return success. So this code we have to use inside of lambda. Before that we have to create one role. Say I am going to create one role. I am creating this for AWS service because this role is going to attach to lambda and lambda is a AWS service. Next, where I am going to use lambda. Next, in my role we have to apply EC2 full access so that it is going to start or stop EC2. Next, lambda basic execution, that is lambda is going to execute na
So Lambda basic execution role also required. Next, CloudWatch full access. I just add particular 3 role, that is 3 permissions. Now role name is Lambda role. Description, Lambda role. Automatically it will create the JSON. It is showing these are the permissions. Create role. Role created. Now I am going to create Lambda. So what is Lambda? Lets you run code without thinking about server. Okay. So Lambda basically 2 bullets. One option is serverless server. Number 2 is automation purpose. Okay. Let's create the function. See, different options are there. Create function. From scratch, my function name is EC2 stop fn. That means this function is going to stop the EC2. Okay, I use this function name. Runtime, which language, which one I am going to use? Python. Fine. x86 64, that is 64-bit. Choose default execution role. Existing one role. Which role? Just now we create a Lambda role. We have to attach this role. Now we are inside of the function. This is function overview. This is by default one function, Lambda function. We have to delete it. And we have to write our code here. So this is my code. हाँ, सब है, ढूंढना पड़ेगा सब. ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मैं वही बता रहा हूँ. ये एक कॉमन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है. लेकिन एक कंपनी अपने लिए एक एप्लीकेशन बनाएगा, तुम अपने लिए एक वेबसाइट बनाओगे तुम्हारे लिए, ठीक है. तो कैसे बनाओगे? गूगल में मिलेगा वो? तो रेडीमेड तो सब कुछ मिलता है, फिर भी टेलर्स है ना. क्यों है? तुम पूछोगे रेडीमेड तो सभी मिलता है ऑनलाइन में. अभी ऑनलाइन में सब मिलता है, फिर दुकान क्यों है? है कि नहीं? हर चीज का एक लिमिटेशन है. हर चीज का, तुम्हारा एक लिमिटेशन है, मेरा एक लिमिटेशन है. हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, उसे हम क्रॉस नहीं कर सकते. सो डिप्लॉय, ये लुक एंड फील इतना चेंज करता है ना AWS. अभी यहाँ था बटन, अभी यहाँ चला गया बटन. अभी मैं थोड़ा ढूंढते जाऊँ, कहाँ गया भाई? 2 दिन में चेंज हो जाता है. BPC में गया, सब कुछ चेंज कर दिया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. कंसेप्ट सेम है, बट लुक एंड फील इज गोइंग टू चेंज. देखो, डिप्लॉय इट. Successfully deployed. Now check it, your EC2 instance, it is running na. Now I am going to
test it, because inside of I mention if type dev then stop it. So test it. एक कोई भी एक ऑप्शन नहीं, उसका टैग नेम है, टैग नेम है. इतना चेंज करता है ना, कंफ्यूज कर देता है. अभी तक हुआ नहीं कुछ, मतलब वो रन नहीं हुआ है. फिर से एक बार टेस्ट करते हैं. एग्जीक्यूशन रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हो क्या बता रहा है. नहीं नहीं, क्लाउड वॉच तो ट्रिगर करेगा, एग्जीक्यूट तो लैम्डा ही करेगा. ठीक है, देखो ये सक्सेस दिखा रहा है, मतलब फंक्शन रन हुआ है. इसका मतलब क्या है, यहाँ स्टॉप होना चाहिए. देखो स्टॉपिंग स्टार्ट हो गया. अभी डायग्राम में चलो, देखते हैं डायग्राम के साथ क्या प्रॉब्लम है. बोलो. अभी आपने बताया ये लैम्डा जो है एग्जीक्यूशन क्लाउड वर्क से होता है. हाँ, लैम्डा एग्जीक्यूशन क्लाउड वॉच से करेगा. मैं वही पूछा सर, तो क्लाउड वर्क से एग्जीक्यूट करेगा राइट. हाँ, लेकिन मैंने अभी लैम्डा को मैन्युअली रन करके देख रहा हूँ कि लैम्डा ठीक है कि नहीं है, फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जब हो गया, मेरा टेस्ट हो गया, अभी मैं क्लाउड वॉच से सेटिंग कर दूंगा कि इस टाइम पे एग्जीक्यूट करो. मुझे टेस्ट तो करना है ना, लैम्डा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो बेसिकली इसका क्लाउड वर्क का बिहेवियर क्या होता है सर, इसकी माने मॉनिटरिंग और शेड्यूलर. मॉनिटरिंग तो करेगा और शेड्यूलर भी ना. और शेड्यूलर भी. ओके. क्लाउड वॉच का काम है मॉनिटरिंग भी, शेड्यूलिंग भी. So right now my lambda is working, that is proved, because this EC2 instance is stopped. Now I am going to start this EC2 instance once more. Pending. Let it be start. Once more we will check, then we are going to add CloudWatch. सर अगर 10 इंस्टेंस भी यहाँ पे रहा और टाइम उसमें 5 इंस्टेंस का डिव है तो पांचों का स्टॉप कर देगा. वो चेक करेगा किसका किसका टैग में डिव है. Now it is running again. Back to lambda function and just test. It will respond success, means my function is properly, it is executed. So my instance should be running to stopping, then stopped. Okay, chalo. CloudWatch, now let it be stopped, then we will run it again. And this lambda function I am not going to run manually. I am going to run this function EC2 stop fn, this lambda function, from CloudWatch. So duplicate it. This is CloudWatch. So in this CloudWatch, in future we are going to learn alarm, log checking, metrics. Now events, within events, rules and event bus. Now I am click on rules. So I am going to set one rules.
EKS or COPS. So let's create one rules. So my rule name RL1. Okay, rule 1 or rule today is 19. Rule 19. Description optional, event bus default. Now rule with an event pattern and schedule. Schedule means rule that runs on a schedule. That means daily at that time it is going to execute, like cron job. In your Linux, cron job. And what is this event pattern? Tomorrow we'll discuss it. This is event pattern means, suppose now I am going to inform to CloudWatch at that time execute it. Event pattern means when this event happen, then CloudWatch is going to trigger. Event means suppose someone is going to upload something to S3, that is an event. Someone is going to download something, that is an event. Suddenly one production server is down, stopped. Okay, that is a production server. So whenever production server is stopping or stopped, that is also event. Due to that event, CloudWatch is going to trigger the Lambda. So one is schedule based, that is the time wise. One is event based. Event means depends on a scenario. If it is, then do it. So today our target is scheduling, right? Not event based. हाँ, बस मतलब जो काम होता है ना, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर भी बस है, डेटा बस, एड्रेस बस, मदरबोर्ड के अंदर वो डेटा फ्लो होता है ना, उसे बस बोलते हैं. ठीक है, जैसे पहले के ज़माने में 8 बिट बस होता था. 8 बिट बस मतलब छोटा सा, उसमें डेटा इतना सा है और एड्रेस इतना सा है, तभी तो जाएगा ना, एड्रेस भी रहेगा. आज के दिन में क्या है, 64 बिट. इसका मतलब क्या होता है, ये जो बोलते हैं आपका लैपटॉप 64 बिट है, OS 64 बिट है, मतलब उसके अंदर से जो डेटा जा रहा है, जो बाइनरी कोड लेके जा रहा है, वो 64 बिट का बस है, उसमें इतना सा एड्रेस है और इतना सा डेटा है. ठीक है, बस मतलब जो कैरी करता है. ये यहाँ भी इसलिए उसको उसी तरह ही बोलते हैं, बस. हाँ, मैंने अभी शेड्यूल किया यहाँ, और कंटिन्यू टू क्रिएट रूल. Same as cron job. If your Linux cron job is over, same minute, hour, days, everything we have to set it. Okay. So what is our requirement? Right now time is 9:35. Suppose I am going to set 40 minutes, 9 hours, day of, asterisk, 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 asterisk. Right? But something is wrong here, because if everything is okay, then it is going to show 10 triggers, matlab next 10 days, today onwards, next 10 days triggers. Here it is going to show the list, but it is not showing. Problem is here, day of the week, here it is not asterisk, question mark. Okay, number 1 solve. Number 2, again problem is there, it is showing that 9:40 UTC, not IST. So if I change this time local zone wise, it is basically configured at 3:10 PM, मतलब आफ्टरनून. तो 9:40 को तो नहीं होगा ना. So how to configure 9:40? So we have to check 5.5 hours, I think. yes UTC to IST converter. Check it. IST 9:36 means UTC 6:4. Okay, AM, वो भी AM, ये मतलब सुबह का जो 4 बजकर, ठीक है, हाँ कुछ 5.5 घंटे का पीछे है. तो यहाँ 40 होगा, तो यहाँ क्या होगा, 3 मिनट ऐड करो, यहाँ भी 3 मिनट ऐड करो. ठीक है,
क्योंकि वी हैव टू सेट यूटीसी बेस्ड, वर्ल्ड वाइड है ना, अपना अपना टाइम तो इतना टाइम तो नहीं दे सकते, इसलिए वर्ल्ड वाइड एक टाइम सेट करके रखा है। तो चलो हम लोग सेट करते हैं 42 में, ठीक है। 42 मतलब क्या होगा, 9:42 मतलब यहाँ 5 मिनट ऐड करो, 42 हो रहा है, यहाँ 5 मिनट ऐड करो, 12 हो रहा है। चलो यहाँ जाकर वी जस्ट चेंज इट 12 और ये 4, लोकल टाइम जोन में देखो 9:45 AM आ गया, ठीक है। यूटीसी में जैसे ही जाएंगे तो ये 4:12 यूटीसी, ठीक है। तो मेरा ये दिस टाइम इज राइट नाउ इट इज परफेक्ट, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ इस टाइम पे वंस दिस टाइम व्हाट हैपन, व्हाट इज द टारगेट? हाँ, क्लाउड वॉच का टारगेट क्या है इस टाइम पे? हाँ? Trigger the event. ट्रिगर Trigger करेगा, the ट्रिगर event. करेगा किसको? AWS service. लैम्डा को। सो टारगेट इज AWS सर्विस, which target? Lambda function, which function? EC2 stop FN, use execution role, use exit role, create a new role, nothing, nothing, nothing. इसको भी रोल देना है, रोल तो वहां दिया था। ओ न्यू रोल छोड़ो, अभी देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी चेंज कर दिया, क्या क्या ऐड किया है। टैग नॉट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट, रिव्यू, क्रिएट, और EC2 इंस्टेंस वी हैव टू स्टार्ट इट। हाँ, अगर 9:42 once it will reach to 9:42, CloudWatch trigger the Lambda. Lambda is going to stop the EC2 instance with the help of IAM role. ठीक है, ये होना चाहिए। We have to check. स्टार्ट के लिए अलग कोड यूज कर सकते हैं या एक ही कोड के अंदर स्टार्ट स्टॉप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे कोड लिखोगे ऐसे काम होगा, कुछ भी कर सकते हो। गूगल में जाके ChatGPT में भी लिख सकते हो, गूगल में भी लिखो पाइथन कोड टू स्टॉप AWS EC2 इंस्टेंस। ये पाइथन, एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा ही समझा रहा है। इंपोर्ट बोटो 3 रीजियन सब कुछ बताया। आपको थोड़ा चेंज, आपका रीजियन चेंज करना है, ठीक है। आपका इंस्टेंस का कुछ ऑप्शन है तो उसे चेंज करना है। देखो क्या है, हाँ बोलो। इसका कोई लिमिट नहीं रखा है, लेकिन लैम्डा जो एग्जीक्यूट करता है ना, उसमें 1,00,000 सेकेंड्स या मिली सेकेंड कुछ ऑप्शन है, वो फ्री है फर्स्ट। हाँ, उसके बाद से वो पैसा लेगा। वही तो बता रहा हूँ, लिमिटलेस। हाँ, आप जितना डेट सेट करेंगे या प्रोडक्शन सेट करेंगे उतना ही काम होगा। सो नहीं, ये तो फ्री अकाउंट है। सी स्टिल इट इज रनिंग, सो 9:41, इट इज शोइंग 9:42. Okay, few second plus minus is there, so you have to check
CloudWatch trigger Lambda. Lambda trigger this Lambda function. It is going to stop the EC2 instance. So you have to check. Yes, it is stopping. Right? That means properly CloudWatch is going to trigger the Lambda. First I check Lambda to EC2. Then I check CloudWatch to Lambda. So CloudWatch to Lambda, Lambda to EC2. Right? Right. Hello, sir. Hello. हेलो सर। हम्म सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे में हमने यहाँ पे EC2 स्टॉक के लिए lambda फंक्शन राइट कर दिया। सपोज इफ वी like we have set up for auto scaling, if there is any instance will be stopped, then another instance will be start, then what will be the concern of this like lambda function? कौन पूछ रहा है? हिमांशु? क्वेश्चन किसका था? हिमांशु का? Yes sir. मैंने क्या बताया? डेव एनवायरनमेंट के लिए मशीन को ऑफ करना था, स्टॉप करना था, स्टार्ट करना था। और तुम जो बोल रहे हो ऑटो स्केल प्रोडक्शन में चलता है, डेव में कभी ऑटो स्केल नहीं चलता है। ठीक है? ओके सर। अभी घर में तुम खाना खाने बैठोगे, तुमको पहले मेनू कार्ड साफ करेगा कोई? पहले मेनू कार्ड देगा, भाई राइस है, मच्छी है, दाल है, सब्जी है। कोई मेनू कार्ड देगा? नहीं देगा। जब तुम शादी बारी में जाओगे तो पहले एक मेनू कार्ड देता है हाथ में या टेबल में। तो दोनों में अंतर है। वो प्रोडक्शन सर्वर हो गया, वहाँ ऑटो स्केल होता है, और ये डेव एनवायरनमेंट होता है। समझ में आया? यस सर। तो क्या सर क्या ये मेनू में क्या मिला? लैम्डा फंक्शन तो सर प्रोडक्शन सर्वर में भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। अगर प्रोडक्शन सर्वर कहीं किसी वजह से बंद हो गया तो लैम्डा यस तुमको सर। मेल फायर कर रहा है कि भाई ये प्रोडक्शन सर्वर बंद हो गया, टेक केयर। वो हो सकता है। मतलब जो लॉजिकल है वो पॉसिबल है ना। प्रोडक्शन सर्वर को मैं स्टॉप नहीं करूंगा, स्टार्ट नहीं करूंगा, हाँ हाँ वो तो है ना। प्रोडक्शन सर्वर किसी वजह से बंद हो गया, ये एक ट्रबल है, बिग इश्यूज है। तो तब इमीडिएट लैम्डा आपको मेल फायर कर रहा है या एसएमएस फायर कर रहा है, ये प्रोडक्शन सर्वर बंद हो गया। वो हो सकता है, कल दिखाएंगे इवेंट बेस। सो चेक इट, मशीन इज स्टॉप्ड। सो नाउ वन बाय वन यू हैव टू डिलीट। ये रूल्स, इसको डिलीट। ये लैम्डा फंक्शन, कंफर्म किया। रोल कोई मैटर नहीं, EC2 तो ऑलरेडी स्टॉप्ड है, कोई इश्यूज नहीं है।